Hello friends, today we will discuss a very important topic, that is 5E model of teaching. You know, this 5E model of 5E instructional model is very useful for teaching. It is very important for all education students, including UG honor students, MA education student, and also very useful for both pre-service and in-service teachers. Those who are pursuing Bachelor of Education B.Ed degree and Master of Education M.Ed degree, this 5E model of teaching is very useful in their internship, both at first year and also the second year. Even in Odisha, the Council of Higher Secondary Education has also prescribed to develop lesson plan at +2 level in 5E model. And what happens in most of times, the students have confusion regarding the 5E model. I have seen also, from my observation, I want to say, students and pre-service teachers are developing lesson plan in 5E model, but actually they are structurally 5E and functionally the Harvard model. It means that they are writing 5E in their lesson plan, but their activities or their acts are just like the traditional model or teacher-centric model. Anyway, now in this class, I will discuss in detail regarding the 5E instructional model developed by Bavay, its historical background, different steps of 5E instructional model, and what is the paradigm shift from traditional model to 5E model. And finally, I will discuss how to develop lesson plan in 5E model. Dear friends, let us start. What is 5E model? 5E instructional model is one of the popular and widely used teaching models in the education of teaching process. From pedagogical point of view, this 5E model is very important, very essential and useful. And this model emphasizes the inquiry-based teaching in the process of knowledge construction. Inquiry refers to a technique that encourages students to discover or construct information by themselves instead of having teachers directly reveal the information. In simple words, the 5E model is the learner and learning centric approach where the learners construct their knowledge through inquiry, discovery, analysis, interactions, interpretations, and self reflection. 5E model ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବା ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଏବଂ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଟିଚିଂ ମଡେଲ। ଏହା ବିଶେଷ ଭାବରେ जो अन्वेषण माध्यम शिक्षा बा निजे निजे पिलांक भितर जो ज्ञान संरचना करिवार प्रेरणा देता है। यही पद्धति बा यही अप्रोच जो 5E अप्रोच शिक्षण केंद्रिक एवं शिक्षार्थी केंद्रिक अटे, जोटी शिक्षार्थी माने निजे निजे निजर प्रयास बल शिक्षकों सहायता बा शिक्षकों जो सुविधा सुजोग माध्यम प्रोत्साहन माध्यम अन्वेषण जरिया आविष्कार जरिया विश्लेषण संश्लेषण आलोचना प्रश्न उत्तर इत्यादि माध्यम ज्ञान संरचना करिथांती। एवं एठारे in this model the students are allowed complete freedom and ample opportunity to construct their knowledge, adapting several methods and techniques. Here the teacher does not act as the knowledge giver or information passer or sources of knowledge or director or controller. Rather, here the teacher plays as the role of facilitator, co-learner and co-constructor. अर्थात ये 5E मॉडल रे शिक्षार्थी माननकु पर्याप्त परिमाण रे सुजोग दिया जाय थाए, स्वतंत्रता एवं स्वाधीनता दिया जाय थाए। से माने सक्रिय भाव रे शिक्षादान कार्य रे शिक्षण कार्य रे संलग्न रहंती, अंतर्भुक्त रहंती, से माने निजे सेतिरे काम करंती
एवं काम कर विभिन्न कार्यकलाप माध्यम विभिन्न शिक्षार्थी मान सहित मिसी सांग मान सहित मिसी शिक्षकों प्रोत्साहन जरिया शिक्षकों मार्गदर्शन सहायतार से ज्ञान संरचना करें। शिक्षक केवल ज्ञानदाता नुहति एठारे उभय शिक्षक और शिक्षार्थी मिसिक ज्ञान संरचना करिवारे शिक्षण कार्य को तुले था। Similarly, the strategy of teaching is not like passing information through one-way jet type of strategy to reach at the students for memorization or by heart without conceptual understanding. Rather, this approach adopts individual, pair, peer, and collaborative learning approach in which each and every learner will be the active learner and each will do his or her self-effort to construct the knowledge at their end. यही शिक्षा जो पद्धति अच्छी प्रक्रिया अच्छी एठारे छात्र छात्री माने से माने विभिन्न अवधारणा जो कॉन्सेप्ट्स अच्छी से कॉन्सेप्ट को बा जो माने अंध भाव ताकू माने घोषिबा परिवर्ते बा अंध भाव मन रखिबा परिवर्ते से अवधारणा गुडी को बुझिबा पई चेष्टा करिथांती ताकू ठीक रूपे परीखिबा पई प्रयास करिथांती एवं से माने व्यक्तिगत भाव रे सांग मानक सहित साथी मान सहित एवं सामूहिक भाव अर्थात व्यक्तिगत भाव एवं सामूहिक भाव शिखिबार प्रयास करिथांती निजर प्रचेष्टा बेले जानिया प्रयास करती एवं एठारे शिक्षार्थी सबुबले सक्रिय शिक्षार्थी बा सक्रिय भाव में अंशग्रहण करिथाए एवं शिक्षक सेमानकु विभिन्न कार्य सहयोग करिथांती एवं एही शिक्षा पद्धति रे विभिन्न प्रकार एक्टिविटी आउ अनुभव भित्तिक शिक्षा प्रदान माने ग्रहण करिया पे प्रयास करा जाय। एबे देखिबा what is the brief history of 5 instructional model, how this model was developed, who was developed this, in what purpose and for why this model was developed. Basically, the 5E instructional model was developed for teaching the biological sciences, so it is popularly known as biological sciences curriculum study 5E instructional model. Try to understand. This model is originally or popularly known as biological sciences curriculum study 5E instructional model or BSCS 5E instructional model. यह मुख्यतः विज्ञान शिक्षादान विशेषकर जीव विज्ञान को पढ़ेवा पाई शिक्षादान पाई ए मॉडल टी तैयारी करा जायतिला। And the chief exponent of this model was developed by Roger W. Bivey, the former director of BSCS, and his associates. Who were the associates? Nancy Landis, Jim Ellis, Janet Carsolon, Deborah Muscola, William Robertson, Susan Woolley, Stephen Scowday, G. Foster. So they were the associates of Roger W. Bivey. It means in the collaboration with or under the headship of Roger W. Bivey, this 5E model was developed basically for designing science lessons. This is, again I am repeating, this instructional model, the 5E instructional model was basically designed or basically developed for developing science lesson. And this approach is based on cognitive psychology, constructive learning theory, best practices in science teaching. Bivey, the chief exponent of 5E instructional model, declares that. He says, what is the importance of this 5E instructional model? He says, using this approach, students redefine, reorganize, collaborate, and change their concepts through self-reflection and interaction with their peers and their environment. Learners interpret objects and phenomena and internalize those interpretations in terms of their current conceptual understanding. एठी बाइवे स्पष्ट भाव में कहवाक चाहते यही मॉडल उपयोग फल व्यवहार फल पिला माने निज प्रचेष्टा निजर जो पूर्व ज्ञान पूर्व अनुभव को उपयोग करी से माने विभिन्न अवधारणा गुड़ी को से माने संज्ञा निरूपण करेंगे, व्याख्या करेंगे, स्वीकृति प्रदान करेंगे एवं विभिन्न प्रकार जो कॉन्सेप्ट गुड़ा को निजर जो अच्छी विजन अच्छी बा निजर जो अंतर्दृष्टि अच्छी इनसाइट अच्छी से इनसाइट माध्यम सांगसाथी मान सहायतार परिवेश अनुसार बा परिवेश को उपयोग करी से माने कौन करेंगे ज्ञान संरचना करेंगे।
ଏବଂ ସେମାନେ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ, not by hearting, rather understanding the concept and internalize this concept. ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ସେମାନେ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ. Again he says science teachers and curriculum developers may integrate or apply the model of several levels. This model in several level. The model can be organizing pattern of sequence of daily lessons, individual units or year plans. माने एहाकू आमे daily lesson रे भी व्यवहार करि परिबा, individual units ପାଇଁ यूज करि परिबा एंड प्लान्स ପାଇଁ यूज करबा. अवश्य से बाइबे स्पष्ट भाव रे कहचंती आकू गुटे यूनिट भाव रे व्यवहार करिया उचित. And Professor Roger W. Baive clearly writes regarding the attempt to develop this popular 5E model of teaching in the paper entitled the BSCS 5E instructional model, personal reflection and contemporary implication as editorial guest. In 2018, for clarifying the different doubts asked across the world regarding the 5E model, he wrote the editorial as the editorial guest, and he clarified number of the doubts regarding the 5E instructional model. Several questions were asked and he clearly mentioned what are the right answer or what is the best use of this 5E model. So he says in this paper, more than 25 years ago, a team of colleagues and I created the 5E, created the BSCS 5 instructional model. At that time, we were developing a program for elementary science and health and needed two instructional model. With an hour of long history of instructional models, the BSCS team adopted the learning cycle described by J. Maron Atkin and Robert Karplus in 1962. Their model was used in the elementary school program Science Curriculum Improvement Study developed at the Lawrence Hall of Science of Berkeley, California. At that time, we had proposed BSCS program in mind. We had no idea that in the decades that followed, the instructional model would be widely applied, commonly modified, and frequently used without reference or recognition of its origin. ସେ ତାଙ୍କର ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି 25 ବର୍ଷ ତଳେ ସେମାନେ ଏଭଳି ଏକ 5 ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନାଲ ମଡେଲ ଯାହାକି ଆଜି ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଇଛି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି 80s ପରେ ପରେ ତ ଏଇ ମଡେଲକୁ 25 ବର୍ଷ ତଳେ ସେମାନେ ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବା ଏଭଳି ମଡେଲ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଯେ ମିରନ ଅଟକିନ ଓ ରୋବର୍ଟ କାର୍ପଲସଙ୍କ ଯୋଉ ମଡେଲ ଥିଲା ଯେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ସ୍କୁଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସାଇନ୍ସ କରିକୁଲମ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟଡି CSIS जो थिला ताकू से माने फॉलो करथिले एवं से माने खुशी व्यक्त भी करिसंती जो मॉडलटा 25 वर्ष पहिले श्रम बहुत परिश्रम करी तयारी कराइतला आज से लोकप्रिय हेछि एवं जनप्रिय हेछि. The chief exponent Professor Baive and his associate admitted that the idea of BSCS 5 instructional model was not new. They were influenced by different models of teaching developed by different experts and different planners. ସେମାନେ କହିବା କଥା ହେଉଛି ଏ ଯେଉଁ 5 ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନାଲ ମଡେଲ ତାଙ୍କର ଓରିଜିନାଲ କାମ ନ ହେଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ କାରଣ ଏଇ ମଡେଲ ଯଦି ତ ସେମାନେ ଡେଭଲପ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଡେଭଲପ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମଡେଲର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସହାୟତା ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ରେଫରେନ୍ସ ନେଇଛନ୍ତି. ଦି କି ମଡେଲ୍ସ highly influenced to develop this 5 instructional model where your John Friedrich Herbert's teaching model, John Dewey's teaching model, Hayes, Owen or Hoffman's learning cycle, and also the mostly the 5 instructional model of Baive and his associate was influenced by the philosophical and psychological details from the learning cycle of J. Maron Atkin and Robert Karplus. Okay, let us discuss how they developed this model. You see two types of model. This is historical models developed by Herbert in 1990s. Your 1900 and Dewey during 1930s, and you are Hayes, Owen and Hoffman who developed their model in 1950s. And these are the historical models and fully influenced to develop this 5 instructional model of Baive and his associate. And Baive admitted that and his associates admitted that they are very much influenced by Atkin and Karplus model which was developed in 1960s.
And following the footpath of Atkin and Karplos model, who divides the three steps like exploration, your invention, and discovery. And following this historical and contemporary model of Atkin and Karplos, they developed 5E model, 5E model of teaching that is popular, not the 5E instructional model of YWAY. And why it is 5E model, 5E instructional model? Because it consists of the 5E. What are the 5 E's? Engagement, exploration, explanation, elaboration and evaluation. आकु जदि आमे ओडिया रे कहबा नियोजन, आविष्कार, व्याख्या बा वर्णना, विस्तृतीकरण बा प्रसारण बा संप्रसारण एवं नेक्स्ट होची मूल्यांकन. ए पांचटी मान जो स्तर बा पर्याय ए पांचटी स्तर को नै यही मॉडलटा डेवलप होइतिबारु याकू 5E इंस्ट्रक्शनल मॉडल बोली कुहा गला. ए पांचटा स्तर काम कोन व्हाट आर द बेसिक फंक्शन और द रोल ऑफ दिस 5 मॉडल. एंगेजमेंट स्टेप इज प्योरली मीन्ड फॉर एक्टिवेट द प्रायर नॉलेज. पूर्व ज्ञान को सक्रिय करबा होची एंगेजमेंट रा प्रमुख कार्य. द्वितीय काम वाला एक्सप्लोरेशन रा काम होची चैलेंज द your the prior knowledge, challenge the prior knowledge, the main role and responsibility at the exploration stage. Third one is to construct new knowledge or to acquire new knowledge or to gain the new knowledge. नूतन ज्ञान संरचना करिबा एला तृतीय नंबर बा एक्सप्लेनेशन काम स्टेज रा काम. Elaboration, what happens? It has to expand the knowledge what constructed. जो ज्ञान आहरण करा गला, जो ज्ञान संरचना कराला ताकू प्रसारण करिबा, जीवन रे प्रयोग करिबा एवं शेष स्तर होची मूल्यांकन, जोटी को औपचारिक भाव रे मूल्यांकन करी इवैल्यूएट the what extent the knowledge has been constructed, how far the teaching learning approach has become successful. To know that, the last stage is the evaluation stage. Let us discuss what is the paradigm shift from traditional model to 5E model. You know, in the traditional model, the emphasis was on the knowledge transmission or knowledge acquisition. But in your 5E model, emphasis is given to the knowledge construction. जदि पूर्व मॉडल गुडाकरे ज्ञान संरचना बा ज्ञान स्थानांतरण ऊपर बेसी गुरुत्व दिया जाउतला, ज्ञान आहरण करा जाउतला, जोटी की जो मेमोराइजेशन ऊपर स्मृति ऊपर बेसी मन पकाउतला. किंतु एठी कोन करा गुरुत्व दिया जाउतला, एठी ज्ञान संरचना नॉलेज कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्टिविज्म जो कांसेप्ट अछि ता अनुसार बा थ्योरी अछि ता ऊपर आधारित कॉग्निशन and constructivism approach रे राची ज्ञान संरचना knowledge construction through the past knowledge or the past experiences. And in the traditional model are the teacher centric and book oriented. जो पारंपरिक शिक्षा मॉडल गुडी को कोन होची शिक्षा नमूना गुडी को कोन होची ना शिक्षक केंद्रित एवं पुस्तक आधारित. But you are the 5E model is purely learner centric and learning based. यह संपूर्ण रूपे शिक्षार्थी केंद्रिक एवं शिक्षण आधारित. उद्देश्य होची शिक्षण ही उद्देश्य एटा. In the traditional model, the role of the teacher is very passive. The students are simply acquire the knowledge what the teacher is telling. They are the simple receiver. They are simply the listener. But in your 5E model, the students are active. They are the active learner for construction of the knowledge. सेमानो सक्रिय शिक्षार्थी कोन पय ज्ञान रो संरचना करिबा पय. And teacher as the task giver, source of knowledge. In the traditional model, the teachers are the task giver, director, dictator, source of knowledge. But in your 5E model, students are knowledge teachers are the facilitator, they are the guide. Okay. So lecture method or oral transmissions are the main methods of teaching in your traditional models. But in your 5E models, emphasis is given on the activities, experiential learning, experience-based learning, dialogue, discussion, interaction. Okay, so such type of activities and methods are adapted for the knowledge construction for the learning in 5E model. So in your traditional model, the teaching is what the lecture methods is used and the individual work of the students is focused very much. पिला व्यक्तिगत भाव में शिखिबो मन रखिबो एवं परीक्षा लिखिबो तार मूल्यांकन इत्यादि. बट इन योर 5E models, emphasis given the self learning, peer learning and collaborative learning. पिला निजे शिखिबो
सांग साथी मेलार शिखिबो सांग सहित माने मिलित भाव रे शिखिबो द्वैत भाव रे शिखिबो एवं सामूहिक भाव रे शिखिबो एठी एवं so far the assessment is concerned in a traditional model we generally focus on the written work only and using the test or questions only but in 5e model several your methods and techniques are used for assessment of the students performance that can be called as the continuous and comprehensive evaluation process has been adopted in the 5e model of teaching written work oral work different activities different tools beside the question paper test etc your rating scale rubrics then your checklist portfolio analysis. So several tools and techniques are used for the your assessment of the students, and not only the you are in this approach. Not assessment is not only done from this by assessing the students only or performance of the students only. It also takes the help of the peers, the society members, teachers, and others. So in the 5E model of teaching, the learning you are the teaching approach and the assessment approach is also the collaborative process. Collaboratively, the teaching, learning, and assessment are done in the 5E model, 5E model of teaching. संक्षेप कहले 5E मॉडल ऑफ टीचिंग रे शिक्षार्थी मानकर ज्ञान संरचना उपर गुरुत्व दिया जाए यह संपूर्ण शिक्षक शिक्षण केन्द्रिक एवं शिक्षार्थी केन्द्रिक अटे एठारे शिक्षार्थी सदा सर्वदा सक्रिय रही थाए विभिन्न कार्य अंशग्रहण करथाए शिक्षक माने पिला मानक विभिन्न प्रकार प्रोत्साहन दियंती जने जने सुविधा सुजोग प्रदान करी भली काम करंती एवं से माने विभिन्न प्रकार एक्टिविटीज माने अनुभव भित्तिक शिक्षा विभिन्न प्रकार कार्यकलाप करि थांती आलोचना वार्तालाप एवं अन्यान्य प्रकार कार्यक्रम से करें किभली भाव करें ना एकक भाव करें द्वैत भाव करें एवं सामूहिक भाव मिलित भाव गोष्ठीगत भाव शिक्षा ग्रहण करने एठारे सुजोग दि जाए एवं देखा प्रति स्टेप रे आम कौन कौन करवा शिक्षार्थी भाव में कौन करवा शिक्षार्थी भाव में कौन करवा कौन कौन व्हाट आर द रोल ऑफ टीचर रोल ऑफ द स्टूडेंट्स व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ईच एंड एवरी स्ट्रेटेजी एवरी स्टेज what strategies are generally adopted in each and every stage. Let us discuss the first one that is called engage, Niyojono. So, what is the main objective of this stage? The main objective of this stage is to make students ready for learning, to capture the students' attention and interest, to engage students in the learning task, get the students focused on a situation, event, demonstration or a problem that involves the content and abilities that are the aim of instruction, to know the prior knowledge of the learners, make connections to past experiences and expose students to mitigate cognitive disequilibrium. तो यही जो नियोजन स्तर रहा नियोजन स्तर मूल लक्ष्य होची पिला मानकु शिक्षादान बा शिक्षण प्रक्रिया प्रति आकर्षित करवा से सक्रिय करवा से प्रस्तुत करवा से पूर्व ज्ञान संबंध में अवगत होगा तांकर पूर्व बा वर्तमान जो आमे जो विषय संबंध में आलोचना करने को जाउछंती से विषय सहित तांकर पूर्व ज्ञान की संबंध अच्छी से संबंध जानिबा जो आमे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ जेन पियाज अच्छी तो अच्छी से जो एसिमिलेशन एकोमोडेशन इक्विलिब्रियम डिसइक्विलिब्रियम कांसेप्ट आसुची ए कथा एडी प्रयोग होबो एटारे and what strategies are generally used for during the engagement stage how to engage the students so what strategy are generally used at this stage the teachers can use different type of the strategy to engage the students or at the first stage of the 5 instructional model they can ask the question telling the story posing and defining the problem situation different acting out your problematic situation are the examples of strategy to engage the learners and focus them on instructional task okay एई स्तर रे पिला माने को सक्रिय करबा पई तांकर पूर्व ज्ञान को जानिबा पई तांको वर्तमान जो नुआ प्रसंग विषय रे तांको सहित अवगत करबा पई बा कनेक्ट करबा पई कोन करा जाय पारे ना विभिन्न प्रकार परिस्थिति दिया जाय पारे गोटे समस्या दिया जाय पारे प्रश्न उत्तर कार्यक्रम हो पारे गप कह जाय पारे चित्र देखा जाय पारे छोट सिनेमा बा फिल्म देखा जाय पारे विभिन्न प्रकार कौशल अवलंबन करके पिला मानकु नियोजन करा जाय पारे and the role of the teacher is the role of teacher at this stage is to present the situation and identify the instructional task the teacher also sets the rules and procedure for establishing the task शिक्षक और भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण से एक शिक्षण परिवेश तैयारी करिवे एवं से परिवेश रे कोन करिवे पिला मानक भितर गोटे
गोटे सिचुएशन बा गोटे प्रॉब्लम बा गोटे गोटे विषय को उपस्थापन करने पे चेष्टा करेंगे एवं से जो इंस्ट्रक्शनल टास्क अच्छी जो शिक्षादान कार्य अच्छी ताकू चिन्हट करेंगे एवं स्वीकृत प्रदान करने पे प्रयास करेंगे and what will be the outcome of this engagement stage. The successful engagement results in the students being puzzled and actively motivated in the learning activity, both mental and physical activity. अर्थात यही स्तर मुख्य काम है पिला शारीरिक भाव में मानसिक स्तर में प्रस्तुत करवा से पूर्व ज्ञान अच्छी सक्रिय करवा एवं पूर्व ज्ञान सहित आज जो आलोचनार पद्धति जो नुआ विषय अच्छी ता सहित संपर्कित करवा ता सहित संयोग करवा एवं तांको भितर विभिन्न प्रकार प्रश्न मन भितर उठला भाया काम करवा ये स्तर मुख्य काम। द्वितीय स्तर हूँ एक्सप्लोरेशन जहाँ आम कहे आविष्कार जे तांको भितर कौन अच्छी से विषय ताको आविष्कार करवा भितर कौन अच्छी खोजार टू एक्सप्लोर टू ड्र आउट what the students know about the present topic or the teaching points. The basic difference between the engagement and exploration stage is that the former brings about disequilibrium where the latter initiate the process of equilibrium. जेतेबेले नुआ परिस्थिति पिलांग पाखरे उपस्थापन करा जाउची पिलांग भितर कोन हबो ना disequilibrium असमानता सृष्टि unbalanced situation will be created in the engagement stage, but in exploration stage through exploration, through drawing out the conceptual clarity and understanding of the students, the disequilibrium will be converted to the equilibration. तो ये कौन हम से जो द्वितीय स्तर प्रथम स्तर जो डिसइक्विलिब्रिएशन थिला जो अनबैलेंस थिला हाँ से अनबैलेंस बा डिसइक्विलिब्रियम कौन करा ना इक्विलिब्रेशन रे परिणत करा जिवो. And what is the main objectives of what are the main objectives of your exploration stage or explore stage? To challenge their prior knowledge, to explore the ideas, to resolve the disequilibrium of the engagement experiences, to formally introduce and discuss the concepts, process or skills, provide concrete hands-on experiences where the students express their current conception and demonstrate their ability as they try to clarify puzzling elements of the engagement phase. प्रथम कथा होची सेमान जो तांकर जो प्रारंभिक बा पूर्व ज्ञान थिला ताकु से चैलेंज करिवे नूतन आइडिया गुडी को डेवलप करबा एक्सप्लोर करिवे तांको भीतर जो डिस इक्विलिब्रियम थिला ताकु से माने बैलेंस करिया पे चेष्टा करिवे एवं एठी नुआ अवधारणा बा नुआ कांसेप्ट बा नुआ विषय वस्तु को उपस्थापन करा जिवो से विषय वस्तु विभिन्न जो कांसेप्ट्स अछि जो विभिन्न दक्षता अछि विभिन्न प्रक्रिया अछि ताकू पिला माने केते दूर जानिचंती कोन जानिचंती तांकर सेते डेप्थ केते अछि से सब विषय रे कोन करा जाय ना आविष्कार करा जाय बा उन्मोचन करा जाय पिला पाखरे कमेंट टू अनफोल्ड जी व्हाट इज अनफोल्डेड टू अनफोल्ड व्हाट इज अनफोल्डेड जा तांको भितर लुचिके अछि ताकू कोन करा जिवो ना एक्सप्लोर करा जिवो बा उन्मोचन करा जिवो. What is the role of the teacher? The role of teacher is very vital here because he has to create the environment. He has to we can say organize different activities. That's why the we can say the things which the students know well that can be explored. पिला माने जहाँ जानी चंती ताकू उन्मोचन करिवा पई ताकू आविष्कार करिवा पई शिक्षकों को विभिन्न प्रकार कार्यकलाप करिवा को पड़िबो पिला मानको को विभिन्न एक्टिविटी माध्यम रे तांको भीतर थिबा अंतर्निहित गुणावली जो हिडन कैपेसिटी अछि लेटेंट कैपेसिटी अछि जो कांसेप्ट ऊपर तांकर जो बोधगम्यता अछि ताकू से कोन करिवे उन्मोचन करिवे बा आविष्कार करिवा पई प्रयास करिवे. So what is the role of the teacher? To initiate activity and provide appropriate background. गोटे कौन से कार्य को से इनिशिएट करेंगे आरंभ करेंगे एवं गोटे भल पृष्ठभूमि देवे एवं सुजोग देवे जहाँ फल पे विशेष भाव में अधिक कहे अधिक जिनस करें गोटे कम को अधारू छाड़ दि जाए अधिक करने सुजोग दिज्व विभिन्न कनसेप्ट कौन डिफाइन कर कौन जानते से विषय से कौन करेंगे ना कहे. टू अलाउ स्टूडेंट्स टाइम एंड अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्टिगेट ऑब्जेक्ट्स materials, equipment and situation based on each individual's own ideas of the learning phenomena. एठी कोन हबो शिक्षक शिक्षार्थी मानकू पर्याप्त समय देवा दरकार छी जहाँ फल से विषयटा को जानवे देखिए तापर अनुसंधान करेंगे से विषय वस्तु तार जो मटेरियल्स अच्छी इक्विपमेंट्स अच्छी से भल भाव तन्न कर परीक्षा करेंगे एवं परीक्षा कर सारा पर से परिस्थिति को जानी सारा पर से परिस्थिति संबंध में ना कौन करेंगे ना कहे जो भाव को उन्मोचन करेंगे बोधगम्यता को परिप्रकाश करेंगे.
That is why for the teachers can use the tangible materials, equipments and concrete experiences. एटी पिला गोटे concrete experiences देवा पे चेष्टा करेंगे एवं विशेष कर जो जिनस गुड़ाक छुई हेब देखी हेब से भाया टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स को से भाया जिनस पिला उपस्थापन करा पड़ो एवं शिक्षक फैसिलिटेटर भाव में शिक्षक बेसी पिला आदाय करने चेष्टा करेंगे पिला बेसी कहे टीचर खाली गोटे गोटे छोटिया छोटिया एक्टिविटी छोटिया छोटिया काम करते जो फल पिला उत्साहित होगी अधिक अधिक भितर थिबा कॉन्सेप्ट समझे से कहि पारिबे let us discuss about the third step that is called the explain or explanation stage जोटी कि व्याख्या करिवे पिला माने वर्णना करिवे प्रथम स्तर रे पिला माने कोन कले तांकर पूर्व ज्ञान को संपर्कित करे निजे प्रस्तुत हले द्वितीय स्तर रे से माने कोन कहले ना तांकर जो विषय ऊपर जो नूतन सिचुएशन दिया गला नूतन समस्या दिया गला नूतन विषय वस्तु तांकर ऊपर उपस्थापन करा गला से ऊपर से माने केते जानि छै ताकू परिप्रकाश कले तार उन्मोचन कले एवं ताकू शिक्षक आविष्कार करेले एवं तृतीय स्तर रे कोन करा जिवो सेही जो कांसेप्ट अछि डिफरेंट कांसेप्ट्स different activities जो उपस्थापन कराई छी so the next stage is to explain detail regarding the students will try to define it in detail regarding different concepts एटी पिला माने व्यापक भाव में वर्णना करने चेष्टा करें किंतु एठारे शिक्षक भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण जदि पिला माने कॉन्सेप्ट ऊपर जति से माने व्याख्या कले जति बुझेले बा जति से माने संज्ञा निरूपण कले बा ताकर वर्णना कले जदि पिला माने सठिक रूपे करि पारु नाथि से मानक बोधगम्यता पई से माने अधिक से कॉन्सेप्ट बुझिबा पई जानिया पे शिक्षक सेठी कोन करिवे बा वर्णना करिया पे व्याख्या करिया पे यथेष्ट सहयोग करिवे पांचटी जगह स्टेप भितरु बेसी शिक्षक अधिक भूमिका ये अच्छी टिके शिक्षक अधिक काम करेंगे गोटे ना एक्सप्लेनेशन स्टेज रे टू एक्सप्लेन द फेनोमेना साइंटिफिकली टू मेक द कॉन्सेप्ट प्रैक्टिसेस एंड एबिलिटीज विथ which students are originally engaged and subsequently explored now are made clear and comprehensive to elicit and develop students explanation using different strategy मु आगुर कहउतले जे पिला माने जो कथा जो एंगेजमेंट स्तर रे जहा करथिले एवं जो उन्मोचन स्तर रे जहा उन्मोचन करथिले ताहा को टिके व्याख्या करिया पई और टिके व्यापक करिया पई एवं पूरा सहज सरल एवं आमे कहबा जे बोधगम्य करिया पई शिक्षक एटी विभिन्न प्रकार कौशल अवलंबन करिवे विभिन्न प्रकार स्ट्रेटेजी अवलंबन करेंगे जहाँफल से कौन हम ना कनसेप्ट गुड़ाक सुंदर भाव में व्याख्या नहीं पार एवं संपूर्ण भल भाव में कौन वर्णना कर कौन सब स्ट्रेटेजी यूज हम वर्बल एक्सप्लेनेशन वीडियोस फिल्म एजुकेशनल कोर्सवेयर आर यूज्ड टू इलिशिएट एंड डेवलप स्टूडेंट्स एक्सप्लेनेशन पिला मानकर जो वर्णना कौशल व्याख्याकरण विकास करने एठारे कौन हम विभिन्न विशेषकर आलोचना पर्यालोचना प्रश्नोत्तर विभिन्न वीडियो देखा विभिन्न चित्र देखा विभिन्न प्रकार चलचित्र देखा एवं ये सब देखी पिलांकर भितर जो वर्णना शैली तो तांकर माने अर्थात गोटे कॉन्सेप्ट बा अवधारणा उपरे अधिक अधिक जानिबा अधिक अधिक बुझिबा से जिनसर अर्थात गोटे कॉन्सेप्ट जो गोटे व्यापक जो बोधगम्यता विशेष करी आमे कोन करबा एक्सप्लेनेशन स्टेज रे हेताय तेनु शिक्षकर काम कोन डायरेक्ट स्टूडेंट्स अटेंशन टू की एस्पेक्ट्स ऑफ द prior phases ask students for explanation using students explanation experiences एटी शिक्षक कोन हबो अधिक रु अधिक पिला को पचारिबे अधिक रु अधिक तांको सुजोग देबे स्कैफोल्डिंग दा बेसी काम करिवो टिके टिके जदी जदी पिला कहि पारुनी टिके छोटिया जगह झुंटुची कि जानि पारुनी ताकू टिके छोटिया छोटिया क्लू देबे टिके गेसिंग करिया पे सुजोग देबे टिके अधिक कहया पे टिके सुजोग दे देबे जहा फल पिला माने व्यापक भाव रे तांकर जो बोधगम्यता को से परिप्रकाश करि परिबे एवं चतुर्थ स्तर होची इलाबोरेट अर्थ होची विस्तृतीकरण बा को कुछ संप्रसारण जो ज्ञान से संरचना से जो विभिन्न अवधारणा संबंध कॉन्सेप्ट संबंध विषय वस्तु संबंध से बुझिले जानिले ज्ञान संरचना कले ताकू केमिति एक्सपांड करि परिबे हाउ कैन दे एक्सपांड हाउ कैन दे एक्सटेंड how can they enrich the concepts and ability developed in the prior phases that is engagement exploration and exploration नियोजन उन्मोचन एवं जो वर्णना बा व्याख्या रे जो सब कथा गुड़ाक आसला जी सब बोधगम्यता आसला जो नुआ ज्ञान संरचना आसला नूतन ज्ञान जो आहरण है नुआ नुआ जो अवधारणा से जानिले ताकू किपरि भाव में स्थान ट्रांसफर करें केमी संप्रसारण करेंगे जीवन में एवं विभिन्न अन्य क्षेत्र में केमी प्रयोग करें तार मुख्य काम होची elaboration stage to facilitate to the transfer of concepts and ability to relate what a new situation to use activities that are a challenge but
achievable by the learners. Generalization of the concepts, processes and skills is the primary goal. तेणु जो कथा है जो कथा गुड़ा मैंने शिखिले ताकू कौन करेंगे नूतन परिस्थिति रे नूतन समस्या को समस्यार समाधान करने कमी प्रयोग करेंगे से व्यवहार करेंगे नुआ नुआ संरचना केमी कर गोटे गोटे कविताटी पढ़ले से भाया कविताटी से रचना करेंगे गोटे कवितार गोटे गोटे धाड़ी छड़ा पंक्ति दिज्व आउ गोटे पंक्ति निजे केमी तैयारी करेंगे गोटे मन गणित गोटे सूत्र से शिखले से सूत्रटा को अन्य दिगरे केमी प्रयोग कर सब कथा गुड़ा कौन हो इलाबोरेशन स्टेज रो मुख्य काम. And the role of the teacher here, or what will be strategies? Engage students in discussion, information seeking activities, group discussion and cooperative learning. विशेष कर सामूहिक आलोचना जो गोष्ठीगत कार्य गोष्ठीगत शिक्षण सामूहिक शिक्षण आलोचना पर्यालोचना परीक्षण ये सब काम गुड़ा जो लेबोरेटरी वर्क हाँ एक्सपेरिमेंट ये सब काम गुड़ा बेसी आम इलाबोरेशन स्टेज हम. एंड द लास्ट स्टेज इज द इभालुएशन स्टेज. what is the main your role or responsibility at the evaluation stage? Here, to what extent the students can construct the knowledge, what extent the students develop their skills and competencies, what extent the students could understand better the different concepts, that will be assessed, that will be evaluated formally. अर्थात केते किपरि भाबे पिला माने ताकर ज्ञानर संरचना है पिलाने केते दूर बुझी पारे दक्षतार केमती विकास है से गुड़ाक केते दूर हो पारे औपचारिक भाव में मूल्यांकन करवा हूँ पंचम थर लास्ट शेष स्तर काम दैट इज कॉल्ड इवैल्यूएशन. एबे मैं आमको आलोचना करी समटाइम्स इन मोस्ट ऑफ केसेस द स्टूडेंट्स आर फेसिंग लॉट ऑफ द प्रॉब्लम्स हाउ टू डेवलप 5 lesson plans. Here I want to simply say what are the steps to be followed before developing or before planning a lesson in 5 instructional model. So let us discuss what are the major steps generally we face. First one is at first the first and primary responsibility of the pre-service and the pre-service teachers and teachers and also the education students who are going to plan lesson plan in a 5 instructional model. At first they should read the lesson out and out until they understand. They should read the lesson and do the content analysis. प्रथम काम वाला विषय वस्तुटा को संपूर्ण रूप पढ़िबे ताको बुझिया पे चेष्टा करिवे एवं जो जो विषय वस्तु अछि तार विश्लेषण करिवे कंटेंट एनालिसिस करिवे अर्थात विषयटा को विभिन्न भाग में विभक्त करिवे. मानकर कह जाओ जो मानकर कह जाओ जदि भाषा हबो लैंग्वेज कथा हमको सेंस ग्रुप पैराग्राफ रे डिवाइड करिया पड़ियो. जदि मैथमेटिक्स की हमर साइंस होची बा एभली सब्जेक्ट होची बा ज्योग्राफी हिस्ट्री होची ताको हम कोन करिया मेजर टीचिंग पॉइंट रे फर्स्ट क्लास ला यूनिट यूनिट को सब यूनिट को मेजर टीचिंग पॉइंट तापर मेजर टीचिंग पॉइंट को सब टीचिंग पॉइंट रे हमको भाग भाग करिया को पड़िबो. सब भाग भाग कर सारा पर आमर काम हम जे व्हिच कंटेंट व्हिच टीचिंग पॉइंट्स हाउ मच टीचिंग पॉइंट्स विल बी टॉट will be taken in for class one lesson plan. आमे केते लेसन केते पाठ गोटे बा केते विषय वस्तु गोटे क्लास में नबा. इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट्स एबिलिटी एंड द रिसोर्स अवेलेबिलिटी एंड स्टूडेंट्स एबिलिटी. आम पाखे टाइम जो संबल अच्छी एवं पिला मानकर जो जो लेवल ऑफ थिंकिंग जो नॉलेज द इंटेलिजेंस रिसेप्टिव कैपेसिटी पिला मानकर जो ग्रहणशीलता पिला मानकर दक्षता से मानकर भीतर जो कॉम्पिटेंसी सामर्थ्य ता आधार आम कौन करवा आमको कंटेंट ना पड़े. जी कंटेंट आम निरूपित समय 45 मिनट घंटाटी भितर आम जी समय भितर सब जिन को सठिक भाव में कर से अनुसार आमको कौन करा पड़ो ना विषय वस्तु चयन करा पड़ो. एंड अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट दैट सो वी हैव टू आफ्टर सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट एरिया और वी हैव टू स्टेट द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स और वी हैव टू फिक्स द लर्निंग आउटकम्स यू कैन से करिकुलर गोल्स. ये जो पाठ पढ़ला पर कौन व्हाई शुड वी टीच दैट ये पाठटा कहीं पढ़ा जीवो ये प्रसंग कहीं उत्थापन करा जीवो या द्वारा पिला मानकर भितर कौन शिखिबार अछि कौन आचरण परिवर्तन वी हैव टू फिक्स दैट. एंड फॉर यू ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर द स्टूडेंट्स आर कमिटिंग मिस्टेक व्हाट बिकॉज while they are stating the instructional objective particularly specific objectives they are using the non action verbs. Dear students, dear friends, whenever you are stating the instructional objectives you must use the action verb. It means that the instructional objectives should be stated in terms of the student's behavior, in terms of the student's behavior. So whenever you are stating the instructional objectives you should try to keep in mind the SMART model. What is SMART? S stands for specific. The objective should be specific. It should be measurable, achievable, result oriented and time bound. अर्थात आम जो लक्ष्य गुड़ाक मुख्य उद्देश्य गुड़ाक आम निर्धारण करवा ताहा स्वतंत्र होता दरकार अछि ताहा
ताकू कौन कर मपा जापर मूल्यांकन कर ताकू हासिल कर ताहा संपूर्ण रूपे उद्देश्य प्रणोदित होइतिबार लक्ष्य लक्ष्य आधारित होइतिबा दरकार छि एवं सठिक समय भितर हम ताकू सारी पारतो ताकू आज स्मार्ट तापरे after stating of the instructional objectives we have to decide the general procedures what methods will be adapted what tools and techniques will be used what TLM will be used what activity will be undertaken that these will be decided you are at the after this statement or after statement of the instructional objective or specific objectives को पद्धति रे हमें पढ़ेबा को शिक्षण पाठ्य उपकरण उपयोग करवा कौन एक्टिविटी करवा कौन कौन सब काम करवा केमिति सेमानकर मूल्यांकन करवा को प्रश्न पचारिबा को स्टोरी कहवा कौन करवा ग्रुप एक्टिविटी करवा कि सिंगल एक्टिविटी करवा कि समस्त मिसई करवा एक्सपेरिमेंट करवा कि ना केमिति कौन करवा को पद्धति अवलंबन करवा तापर निर्धारण करा जिवो स्टेप बाय स्टेप निर्धारण करा जिवो एवं ताहा परे कौन करा जिवो आमे गोटे कथा मन रखा दरकार जे व्हाइल वी आर अडॉप्टिंग द 5 इंस्ट्रक्शनल मॉडल डियर टीचर्स and dear students friends you must use the teaching learning materials because this instructional model focus on the experiential learning जेतु या अनुभूति भित्तिक शिक्षा पिला माननको कार्य करिया पे बेसी गुरुत्व दिया थाए तेनु आमे पाठ्य उपकरण टीचिंग लर्निंग मटेरियल नहीं कि जीवा एवं विभिन्न प्रकार एक्टिविटी निश्चित रूपे करवा बिना एक्टिविटी रे बिना टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स रे 5U मॉडल केबे मते सक्सेस होबा नाही कारण पिला को अधिक रु अधिक काम रे विनियोग करिया पड़ो नियोजन करिया पड़िवो ताको भितर थिबा गुण को आविष्कार करिया पड़ो ताको भितर थिबा शक्ति को बाहर को आनिया पड़िवो एवं सुंदर भाव रे व्याख्यान करिया पड़ो एवं संप्रसारण करिया दरकार छै तेनु करी पिला माने निजे इन्वॉल्व होबे निजे काम करिवे निजे से माने सक्रिय भाव रे अंशग्रहण करिवे सहभागिता तांकर रहइबो ताले 5U मॉडलटा सक्सेस करबो तेनु जेतेबेले 5U मॉडल आमे तयारी करचंते सेतेबेले आमे गोटे मैक्सिमम गोटे प्रोवर्ब को निहाती मन रखिबा व्हेन आई लिसन आई फॉरगेट व्हेन आई सी आई रिमेंबर व्हेन आई डू और इन्वॉल्व आई अंडरस्टैंड आमे जेतल किछि काम सुनुचंदी किछि जिंस सुनुचंदी आ किछि समय पर बा किछि दिन पर हम भूली जाउछन जेतर कोन जे समय देखि थांती ताकू निश्चित रूपे केते दिन पर हम मन पकि पारंती किंतु जदि हम से काम निजे इन्वॉल्व होइचंती निजे किछि करिचंती सक्रिय भाव रे ताले निश्चित रूपे हम कोन करि परिबा ना ताको बुझी परिबा एवं जानि परिबा एवं निश्चित रूपे सबुले ताको मन रखि परिबा एवं विभिन्न समय रे तार उपयोग करि परिबा तेनु एई प्रोवर्ब रा हम समस्त मन रखतिबा एई स्टेप को फॉलो करी कि हमें 5U मॉडल चिंता करिबा ए जो मोडी कंटेंट एनालिसिस सा कहितली रोड उदाहरण हमें गोटे छोटे एग्जांपल दिया छै आपण माने देखि परिबे जे कंटेंट एनालिसिस मन एडी लैंग्वेज इंग्लिश रोड कहै छै आपण माने केमति कंटेंट एनालिसिस करबे ना टेक्स्ट बुक रो ना को लिखिबे तार सेंस गुरु पैराग्राफ बाहर करिवे सेंस गुरु पैराग्राफ रो मेन आइडियाज गुडा को बाहर करिवे मेन आइडियाज बाहर कला बेले वोकैबुलरी एक्सप्रेशन तार स्ट्रक्चरल पैटर्न फंक्शनल का मन रखि जानतु लैंग्वेज पढेला बेले व्हेनेवर यू आर टीचिंग लैंग्वेज you have to focus on the 3 objectives thematic objectives or content based objective linguistic objectives or language based objective and skill based objectives right so in this way we have to develop the content analysis I hope dear friends I tried my level of this to present the 5U model starting from the history to different steps its importance and I hope you could have understood better if you have any problem if you have any query any doubts please you write in my YouTube account YouTube channel and if you are interested to know in new concepts also new subject matter you can also suggest and you can also request me and I will try my level best to satisfy thank you all thank you